रिदम के साथ जब रोटी को भी घुमाना हो तो ये करो। और जब टैक्स सेविंग के साथ लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन करना चाहो तो आप बस ELSS करो। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार के जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। हसल के साथ जब हेल्थ का भी ख्याल रखना हो तो ये करो। और जब टैक्स सेविंग के साथ लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन करना चाहो तो आप बस ELSS करो। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार के जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। फैशन के साथ जब पैशन को भी अपनाना हो तो ये करो। और जब टैक्स सेविंग के साथ लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन करना चाहो तो आप बस ELSS करो। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार के जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। रीडिंग के साथ जब बच्चे को भी बहलाना हो तो ये करो। और जब टैक्स सेविंग के साथ लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन करना चाहो तो आप बस ELSS करो। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार के जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। रिदम के साथ जब रोटी को भी घुमाना हो तो ये करो। और जब टैक्स सेविंग के साथ लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन करना चाहो तो आप बस ELSS करो। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार के जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। हसल के साथ जब हेल्थ का भी ख्याल रखना हो तो ये करो। और जब टैक्स सेविंग के साथ लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन करना चाहो तो आप बस ELSS करो। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार के जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। फैशन के साथ जब पैशन को भी अपनाना हो तो ये करो। और जब टैक्स सेविंग के साथ लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन करना चाहो तो आप बस ELSS करो। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार के जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। रीडिंग के साथ जब बच्चे को भी बहलाना हो तो ये करो। और जब टैक्स सेविंग के साथ लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन करना चाहो तो आप बस ELSS करो। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार के जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। रिदम के साथ जब रोटी को भी घुमाना हो तो ये करो। और जब टैक्स सेविंग के साथ लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन करना चाहो तो आप बस ELSS करो। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार के जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। हसल के साथ जब हेल्थ का भी ख्याल रखना हो तो ये करो। और जब टैक्स सेविंग के साथ लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन करना चाहो तो आप बस ELSS करो। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार के जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। फैशन के साथ जब पैशन को भी अपनाना हो तो ये करो। और जब टैक्स सेविंग के साथ लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन करना चाहो तो आप बस ELSS करो। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार के जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। रीडिंग के साथ जब बच्चे को भी बहलाना हो तो ये करो। और जब टैक्स सेविंग के साथ लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन करना चाहो तो आप बस ELSS करो। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार के जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। रिदम के साथ जब रोटी को भी घुमाना हो तो ये करो। और जब टैक्स सेविंग के साथ लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन करना चाहो तो आप बस ELSS करो। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार के जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। हसल के साथ जब हेल्थ का भी ख्याल रखना हो तो ये करो। और जब टैक्स सेविंग के साथ लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन करना चाहो तो आप बस ELSS करो। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार के जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। फैशन के साथ जब पैशन को भी अपनाना हो तो ये करो। और जब टैक्स सेविंग के साथ लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन करना चाहो तो आप बस ELSS करो। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार के जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।
रीडिंग के साथ जब बच्चे को भी बहलाना हो तो ये करो। और जब टैक्स सेविंग के साथ लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन करना चाहो तो आप बस ELSS करो। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार के जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। रिदम के साथ जब रोटी को भी घुमाना हो तो ये करो। और जब टैक्स सेविंग के साथ लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन करना चाहो तो आप बस ELSS करो। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार के जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। हसल के साथ जब हेल्थ का भी ख्याल रखना हो तो ये करो। और जब टैक्स सेविंग के साथ लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन करना चाहो तो आप बस ELSS करो। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार के जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। फैशन के साथ जब पैशन को भी अपनाना हो तो ये करो। और जब टैक्स सेविंग के साथ लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन करना चाहो तो आप बस ELSS करो। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार के जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। रीडिंग के साथ जब बच्चे को भी बहलाना हो तो ये करो। और जब टैक्स सेविंग के साथ लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन करना चाहो तो आप बस ELSS करो। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार के जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। रिदम के साथ जब रोटी को भी घुमाना हो तो ये करो। और जब टैक्स सेविंग के साथ लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन करना चाहो तो आप बस ELSS करो। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार के जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। हसल के साथ जब हेल्थ का भी ख्याल रखना हो तो ये करो। और जब टैक्स सेविंग के साथ लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन करना चाहो तो आप बस ELSS करो। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार के जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। फैशन के साथ जब पैशन को भी अपनाना हो तो ये करो। और जब टैक्स सेविंग के साथ लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन करना चाहो तो आप बस ELSS करो। It's the two blasters who will be taking part in this game, RSH and BOJANGLES. RSH blasters are out of the competition, and it's going to be just a dead rubber for them, of course. Both the teams are out of the playoff contention. BOJANGLES blasters and RSH blasters. Just a friendly game. And the final game for both the teams in this campaign. The final league stage game of the CCFC T10 League 2023. Short, you cannot have anyone on the outside. Sab andar ho. Yeah, he's right. It's not about the two out. It's about how many inside. वहाँ से खेलने सब अंदर होगा, बाहर नहीं जाएगा। Here we go. First ball. RSH blasters to BOJANGLES blasters now. Ball number 1 of the tournament. Like I said, both the teams are out of the playoff contention, but they'll be looking to end the game on a high. They'll be looking to end the game with a lot of prestige. Single to start things off, and BOJANGLES blasters are off the mark. Whenever you're off the mark, there's always a sigh of relief which you can heave, of course. So it's really good stuff from them. And it's the final day of the league stage, and from tomorrow it's going to be playoffs. It's going to be interesting.
A few adjustments to the field. It's going to be Yusuf Chisti who's batting, I think. Remember, this is the game between the Bojangles Blasters and RSH Blasters. The marquee player, Yusuf Chisti. Oh, good ball. Very good ball that. Inside the off stump. This time, played a good pull shot into the boundary. What a shot. Full toss, lofted cover drive. And it was a single after that boundary. Yusuf Chisti got that first boundary. Now it's Vishesh Agarwal. Yeah, the opener. The two openers, Vishesh Agarwal and Yusuf Chisti. Pro team. That just defended well. It's going to be just a single. Last ball. Last ball from Pro Team. Oh, it's going to be another ball. It's an extra ball. He's bowled that wide. To bowl another of that. This is what he'd like to stop. This is what he'd like to avoid. Once again. The end of the first over. It's 8 for no loss. Look at our sponsors. New bowler in. Rohit Handa, new bowler in. Six, or is it not a six? Straight to the man and deep cover. Lose their first wicket.
It's a big wicket. It's Navya Kapoor. It's to go back. Navya Kapoor is dismissed, and Yusuf Chisti would just be telling his players not to try anything fancy, not to lose the wickets in a heap. It's going to be interesting to see as to what the skipper does here. Skipper Yusuf Chisti, the marquee player of Bojangles Blasters. So a lot of expertise under his belt. Let's see what he does. And Ronnie Dev comes in. There's also Nikhil Bambani, Yashwardhan Kanodia and Pranav Jatia. So there's a lot of batting left for Bojangles Blasters. Rohit Handa, the man with the golden arm. Once again, big appeal. And that was probably lifting down the leg stump. That's not out. Once again, shouts of an appeal, but it's going to be just a single. Just the single run coming, and that too from a leg by. Wicket keeper, essentially the person who's got a 180-degree view of the entire game. Best seat on a field. Just making slight adjustments to the. There you can see the keeper making a lot of adjustments to the field. Now Handa tapped. And he slips. It's going to be just a single. Probably just hurt himself a little bit. He's holding his back. Good shot. And they're going to take just a single. And last ball. Leg buys. Runs, more runs. The end of 2 overs is 13 for 1.
Rohit Handa. Good over. Just conceded 2 runs and also bagged a wicket. This time a full toss on the leg side. It's going to be a boundary. In the dugout of RSH Blasters, and then they are not happy. And why would they be? This time, just a single. And the buys. Once again, it's a wide. Pro team to continue. It's bowling well. This time gets an edge. And that's going to race away to the fence. Ronnie Dev gets a boundary here. Lovely shot. Came right at the middle of the bat. Another boundary. Ronnie Dev showing his class here. Good shot that. Last ball of the over. No timing on that. They get comfortably 2 runs there. The end of 3 overs, it's 30 for the loss of 1 wicket. Yusuf Chisti holding the fort in a solid way from one end.
pro team. It was a little expensive. In the 2 overs, he's conceded 24 runs. Shivanshu Shaw, new bowler in. Let's see what Shaw can do. For a new face. Full toss, driven straight, but there was protection and Shaw completely misses it. It was an easy chance for a run out. He absolutely missed it. You won't get an easier opportunity than that. Maybe the throw was a little too fast from Vedant Gupta, the wicketkeeper, making amendments into the field. Once again, good ball in the block hole. Shivanshu Shaw, this time straight to mid-off. Just a single. Big appeal. Probably different down the leg side. So single. It's going to be interesting to see as to how they pan out the innings. They've got off to a good start. They've been done well so far. Big appeal. This time the finger goes. Playing with the current run rate of 8.87. Ronnie Dev departs. Bojangles Blasters lose their second.
New man in is Pranav Jatia. Let's see what PG can do. Last ball. Just swing down the leg side. It's going to be another ball. 35 the score now. This time cut, but straight to the fielder at short third man. And a look at our sponsor. Yusuf Chisti and Pranav Jatia. Yusuf Chisti making his presence felt, playing a very composed knock. It's a dot ball. Rohit Handa. This time heaved on the leg side. Will it be a 4? Yes, it is. In the gap. Picked the gap really well. Rohit Handa. Oh, good ball. Very good ball from Rohit Handa. Full line delivery. Deceiving the batter.
Shouts for an appeal. It's not given out. This time tapped on the offside, straight to the fielder at point. It's going to be only a single. Rohit Handa bowling really well, bowling the tight line and lengths. It's the pick of the bowlers for me so far in this innings. For RSH Blasters, whoever are at the bottom of the table, they're finishing with the bottom wooden spoon. Put it on the back foot, the skipper. At the end of 5 overs, it's 42 for 2. They look at our sponsors, they're playing with a run rate of close to 8. And a look at the board where the I Love CCFC icon is shown, and also the traditional scoring board. Before the age of digitalization, it was this particular board where all the scorecards were shown, and it's still maintained today, just so that no one forgets their roots. Going good so far. Vedant Gupta, the spinner, in the attack. It will be interesting as to how he weaves the web in Kunjar's magic here. Vedant Gupta, good youngster, good player, good ball. Take a single here, the Blasters. To run quickly, Yusuf Chishti, and it's the big man, the big hitter, Pranav Jatia. Stayed very low. Slog sweep in the air. Does it go the distance? Yes, it does. Superb six that. You can watch that on loop over and over again. Good shot that. Once again in the air, but didn't quite get that timing right. It's going to fall short of the long on fielder, Pranav Jatia. We know that he's a big man. He hit the big shots. Driven straight. Big appeal. Umpire is not interested.
6 overs, 52 for 2. And it's been a decent start. Yusuf Chisti just holding the innings from one end, and Pranam Jatia given the message of firing on all cylinders, going all guns blazing, scoring the big shots, scoring the big sixes. Let's see if we can continue doing that. In the air, the fielder is only a spectator as he watches the ball sail across the fence. Lovely shot that. Lovely piece of timing. Gotham is under pressure. First ball and smacked for a 6. Any bowler would be under the pump. This time it's going to be a wide. Bowled. Gotham has the last laugh. Absolutely cleaned him up. And the new bat is in. New batter in is Yashwardhan Kanodia. Played the 196 matches. Very, very experienced. Another shout, and the keeper tried to throw. RSH Blasters under the pump. Played cheekily. Boundary, that's what Yusuf Chisti is known for. Known for his incredible game sense. Top shot that from a top player. There you can see. Low full toss. It was quicker in the air. Goes to the boundary.
I think he's just injured his finger over there, the wicketkeeper. And the doctor, the physiotherapist is just here to check up on him. It's going to be interesting to see if he continues. If he does, he's going to be an epitome of fearlessness and commitment, of course. No ball. And buys as well. You can see the replay in just a while. We'll see the replay. Yusuf Chisti facing the last ball of this over. Let's see what he can do. Can he finish with a big shot? Just accelerating. Final quarter of the game here. Now into the fence. That's 4. Once again, the final leg region. Mr. Yusuf Chisti is batting on 22. Very good shot that. And a look at our sponsors. Gautam being very, very expensive. Conceded 20 runs. Vedant Gupta continuing, conceded just the 9 runs in the previous over. And that's a wide. Yashwardhan and Yusuf Chisti, the 2 batters. Now smashed through the covers. Brilliant shot here. The Bojangles Blasters just accelerating. The final end of the innings. It's good to see that. Oh, edged. Races away to the fence. Yashwardhan gets 2 boundaries in a row. Good shot that.
Can see the fielder. 2 balls up. It's 9 runs in the over so far. Very poor bowling. Once again, 3 boundaries on the trot. Bojangles Blasters. The fielders are dropping their shoulders. Pathetic bowling that. Total. Short to delivery. 4 boundaries on the trot. Unbelievable scenes here. Lovely bowling. Lovely bowling, Yashwardhan. 4 boundaries on the trot. Can he make it 6 out of 6? Bojangles Blasters have already reached 90. Is it going to be the 5th? No, good work in the deep. It's going to be just a single. Vedant Gupta, it's been a very disappointing spell. Very disappointing bowling. But finishes off with good last 2 balls. 8 overs gone. It's 91 for 3. Look at our sponsors. Vedant Gupta conceding 27 runs in 2 overs. Those 4 boundaries, a total of 18 runs coming from that over. He's definitely not going to be pleased with that. Very, very innovative here from the batsman. Innovative. Two overs left.
think it's going to be a new wicket keeper, just getting into his attire. Yeah, we'll have a new keeper. Bold straight away. Sudeep Bhatter. Very first ball he faces. Yashwardhan. He's probably played that shot a little too early. And it's out. There you can see. Big swing and he's out. Sudeep Bhatter takes a wicket right away. Buys, keeper misses it completely. It's going to be a 4. Bojangles Blasters seems like they'll get a big score under their belt here. Once again, top shot. Bambani. It's a good shot there. You can hear the cheers. Very good shot. Slog sweep that. Two balls left in this over. Once again, it's a very good delivery. Slow through the air to disguise him. And with that, they reach the triple digits, 100. They'll be really happy with 7 more balls to go. Smashed down the ground. Straight to Vedant Gupta. Last ball over. The end of 9 overs. It's 101 for 4. Last over, and a look at the traditional cricket board where previously scoring was done
A big shout out to the guy who's doing the scoreboard as well. He's doing a fantastic job changing the scores to every over. Nikhil Bambani. I mean, when digitalization was not there, when there weren't digital billboards, it was those boards which actually had their prominence. It was those boards which we used, and there was absolutely no digital boards. Smashed, but straight to the man at a long off, and it's a good innings from Yusuf Chisti. The skipper, the marquee player, which comes to an end. Good line delivery. He went down on his knees and played that shot, but straight to Vedant Gupta in the long off region. It's out. Shivanshu Shaw took a wicket in the first ball. It's going to be a wide. There you can see it's wide. It's going to be an extra ball. Shot that. It's going to be just a single though. Swing and a miss. It's a dot ball. Nikhil Bambani. And that's try to heave it on the leg side, and it's going to be just a single. Om Prakash Tiwari doesn't want to come back for that second. Last two balls. It's time. Driven down the ground. It's going to be only a single. It's going to be Bambani who faces the last ball. Last ball.
thick edge. Do they come back for the second? They take their chances. 2 runs completed. 107. 108 is the target. रिदम के साथ जब रोटी को भी घुमाना हो तो ये करो। और जब टैक्स सेविंग के साथ लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन करना चाहो तो आप बस ELSS करो। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार के जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। हसल के साथ जब हेल्थ का भी ख्याल रखना हो तो ये करो। और जब टैक्स सेविंग के साथ लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन करना चाहो तो आप बस ELSS करो। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार के जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। फैशन के साथ जब पैशन को भी अपनाना हो तो ये करो। और जब टैक्स सेविंग के साथ लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन करना चाहो तो आप बस ELSS करो।
म्यूचुअल फंड निवेश बाजार के जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। रीडिंग के साथ जब बच्चे को भी बहलाना हो तो ये करो। और जब टैक्स सेविंग के साथ लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन करना चाहो तो आप बस ELSS करो। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार के जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। रिदम के साथ जब रोटी को भी घुमाना हो तो ये करो। और जब टैक्स सेविंग के साथ लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन करना चाहो तो आप बस ELSS करो। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार के जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। हसल के साथ जब हेल्थ का भी ख्याल रखना हो तो ये करो। और जब टैक्स सेविंग के साथ लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन करना चाहो तो आप बस ELSS करो। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार के जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। फैशन के साथ जब पैशन को भी अपनाना हो तो ये करो। और जब टैक्स सेविंग के साथ लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन करना चाहो तो आप बस ELSS करो। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार के जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। रीडिंग के साथ जब बच्चे को भी बहलाना हो तो ये करो। और जब टैक्स सेविंग के साथ लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन करना चाहो तो आप बस ELSS करो। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार के जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। रिदम के साथ जब रोटी को भी घुमाना हो तो ये करो। और जब टैक्स सेविंग के साथ लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन करना चाहो तो आप बस ELSS करो। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार के जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। हसल के साथ जब हेल्थ का भी ख्याल रखना हो तो ये करो। और जब टैक्स सेविंग के साथ लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन करना चाहो तो आप बस ELSS करो। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार के जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। फैशन के साथ जब पैशन को भी अपनाना हो तो ये करो। और जब टैक्स सेविंग के साथ लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन करना चाहो तो आप बस ELSS करो। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार के जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। रीडिंग के साथ जब बच्चे को भी बहलाना हो तो ये करो। और जब टैक्स सेविंग के साथ लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन करना चाहो तो आप बस ELSS करो। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार के जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। रिदम के साथ जब रोटी को भी घुमाना हो तो ये करो। और जब टैक्स सेविंग के साथ लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन करना चाहो तो आप बस ELSS करो। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार के जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। हसल के साथ जब हेल्थ का भी ख्याल रखना हो तो ये करो। और जब टैक्स सेविंग के साथ लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन करना चाहो तो आप बस ELSS करो। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार के जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। फैशन के साथ जब पैशन को भी अपनाना हो तो ये करो। और जब टैक्स सेविंग के साथ लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन करना चाहो तो आप बस ELSS करो। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार के जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। रीडिंग के साथ जब बच्चे को भी बहलाना हो तो ये करो। और जब टैक्स सेविंग के साथ लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन करना चाहो तो आप बस ELSS करो। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार के जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। रिदम के साथ जब रोटी को भी घुमाना हो तो ये करो। और जब टैक्स सेविंग के साथ लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन करना चाहो तो आप बस ELSS करो। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार के जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। हसल के साथ जब हेल्थ का भी ख्याल रखना हो तो ये करो। और जब टैक्स सेविंग के साथ लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन करना चाहो तो आप बस
ELSS करो। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार के जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। फैशन के साथ जब पैशन को भी अपनाना हो तो ये करो। और जब टैक्स सेविंग के साथ लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन करना चाहो तो आप बस ELSS करो। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार के जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। रीडिंग के साथ जब बच्चे को भी बहलाना हो तो ये करो। और जब टैक्स सेविंग के साथ लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन करना चाहो तो आप बस ELSS करो। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार के जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। रिदम के साथ जब रोटी को भी घुमाना हो तो ये करो। और जब टैक्स सेविंग के साथ लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन करना चाहो तो आप बस ELSS करो। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार के जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। हसल के साथ जब हेल्थ का भी ख्याल रखना हो तो ये करो। और जब टैक्स सेविंग के साथ लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन करना चाहो तो आप बस ELSS करो। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार के जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। फैशन के साथ जब पैशन को भी अपनाना हो तो ये करो। और जब टैक्स सेविंग के साथ लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन करना चाहो तो आप बस ELSS करो। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार के जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। $108 to win, that's the equation. The last innings of the last game in the league stage of the CCFC T10 League. Bojangles Blasters versus RSH Blasters. Bojangles Blasters have put on a humongous total on board. And RSH Blasters would be hoping to chase that. Vedant and Sudeep Bhatta will be opening. Om Prakash Tiwari will open the bowling. Good left arm seamer can swing the ball in both directions. There you go, Tiwari. Ooh. Tried to tap it. Close. That's a wicket. Om Prakash Tiwari strikes first blood. There you can see the replay. Straight away wicket. It's a big one for RHS Blasters. Shivanshu Shaw, the new man in. First wicket fell. Sudeep Bhatter, LBW. Umpire absolutely not hesitant. Raising the finger there.
Om Prakash Tiwari. Bojangles Blasters on top. This time once again, shouts for an appeal, but the umpire doesn't give it and they sneak away a single. That's going to be, of course, leg byes. Oh no, that's not leg byes. I think he's got a hamstring pull. Shit. That doesn't look good. Got to keep yourself hydrated in order to avoid those hamstring pulls. There you can see he seems to be in a little bit of a pain, but he's back up. That's good to see. Good work from that fielder. It's the final innings, remember, in the league stage. It's the final game for both the teams. Om Prakash Tiwari, good over so far. This time driven. Well stopped in the cover region there. They easily come back for that second there. Swing and a miss. Remember, you can watch the live streaming only on the Vayana Sports channel. Catch all the live updates on the Crick Heroes application and the website. End of the over. First over gone. It's 4 for the loss of 1 wicket. Good start. Just the kind of start which Bojangles Blasters would have wanted. There you can see Om Prakash Tiwari. Solid bowler. I mean, he can swing the ball really well. He can take the wickets. Whenever the captain gives him the bowling, he delivers the goods with perfection. Shivanshi Shaw and Vedant Gupta need to make sure that they have a good partnership here. Good partnership would enable them. 2 youngsters batting right now. Good partnership would enable them a win. Required run rate of 11.56 now. It's getting tougher and tougher. They need a few sixes. They need a few big boundaries. Now, Karan Ahuja with the ball, with the white cherry.
Played on the offside. It's going to be just a single. Stopped well by the point fielder. Karan Ahuja conceded just that single. It's a wide ball. That's a good shot. On the leg side, 102. Maybe 101 needed now. To up their run rate here. RHS Blasters. Karan Ahuja, good over so far. He's conceding 3 runs in 2 balls. Vedant Gupta batting with a strike rate of 100. Just taking a look at the fielders. Good ball. They take a single here. This time, 4. Good shot that. You can see just pure timing, not a lot of power on that shot. Just good timing. Shivanshu Shaw. This time wide. The keeper misses it. Calls for 2 there. But they just take a single. Wide and another run. That's so total 2 runs coming off in that delivery. Wow. Last ball. And it's going to be a 4. Shivanshu Shaw gets another for the second boundary. 2 overs gone. It's 15 and a 4, so it's 19. 89 needed in 48 balls. This is a good over. Was a little expensive. From Karan Ahuja, conceded 15 runs. And a look at our sponsors.
And it's the beautiful CCFC ground in Baliganj, which is right in the heart of Calcutta. Very posh area. It's got some superb places to eat, some superb places to visit. Om Prakash Tiwari, it's a good move. They need this partnership to be broken. Played on the leg side. It's going to be just a single. So Vedant just dealing in singles here. Run a ball. .88 needed in 47 balls. Very much possible. Do they come back for that second? Yes, they do. Good running between the wickets. Just adds that extra ounce of pressure on the fielders when you take those runs, when you take those quick runs between the wickets. Edged. There were shouts for an appeal, but it's not given out. Shivanshu Shaw now. Tapped well. And they take a single. Sindhi hai. Just a single. Taken. In the cover. It's a good catch. There you can see Om Prakash Tiwari. Full toss. Gets out in the last delivery. 3 overs gone. It's 24 for 2. They're playing with a strike rate of 8. Gautam Malhotra, the skippers here. Om Prakash Tiwari finished with figures of 2 for 9 in 2 overs. Did really well.
84 needed in 42 now. And the batsman just wearing a cap. It's going to be just a single. Vedant just dealing in singles now. Not looking for those big shots. Pranav Jatia, the big man, he's bowling. It's punched for a single. And the skipper's off the mark, Gautam Malhotra, with that single. Just taking a look at the field. Singles really won't do, they need the big shots. Probably just getting into the groove and then we'll be going for the big shots. Some played on the back foot. That's a boundary. Gets his first boundary of the night. He needs more of those. More of those sublime shots. Played really well. The back foot waited for the ball. Timed it well. Placed it well. And deservedly got 4 runs for that shot. Vedant Gupta, the young man, finally gets a boundary of those after those 9 singles which came off his willow. Big appeal, but drifting way down the leg side. Good call by the umpire. And last couple of deliveries of this over. Still 78 needed in 30th. There you can see the run rate 12.32. They need at least 2 boundaries in an over. They got that. The second boundary. And that would do a lot to the confidence levels of Vedant Gupta. Smash 2 boundaries now. It's looking in supreme touch. It's time. Tapped for a single. It's a really exciting game of cricket which is going on. At the end of 4 overs, it's 36 for 2. Playing with a current run rate of 9. Required run rate is 12. Vedant Gupta now. 72 and 36 balls. It's going to be Vishesh Agarwal who's going to come into bowl. Let's see what he can do.
Smashed in the air. Does that go to the fence? No. Does well. But they comfortably take. Really good to see that the two teams fighting it out, even though they are out of contention for the playoffs. They're still fighting it out. It's a dot ball. Vishesh. Big swing. And wicket keeping has been really, really poor. This time in the air. Wow. Fantastic catch by Om Prakash. I'm not wrong. But Vedant Gupta departs after a good knock of 19. It's a top wicket there. Big wicket. Clearly disappointed with that shot, Vedant Gupta. Sean Kapoor, the new batter in. Vishesh striking. .67 needed in 34 balls now. This time on the leg side. Flicked. It's going to be just a single. Big appeal. And a leg by. They have to go all guns blazing now. RHS Blasters presently the bottom of the points table with just 2 victories in 5 games. With just 1 victory, I beg your pardon. This time flicked. Need to come back for that second? No. Would have been too risky. Current partnership of 3 runs and 3 balls. 64 needed in 31 balls. Bold. Cleaned him up completely. The skipper departs. Vishesh takes his second wicket of the over. This is just the game. Captain is to
Rohit Handa. New man in. Played a total of 18 games. Has got a decent strike rate, but RSH Blasters 4 wickets down. Karan Ahuja conceded 15 runs in the previous over. He's back. Now on the offside, saved well by the point fielder. Smashed. Big appeal. Umpire doesn't raise a finger. Karan Ahuja. Good ball. Sean Kapoor tried to heave it on the leg side, but a very poor shot. Full toss. 4. And that's a no ball signaled by the umpire straight away. It's an extra ball. Good shot that. Karan Ahuja, last ball. 57 needed in 25 now. 56 needed now of the last 4 overs. 6 overs gone. It's 52 for 4.
And CCFC. It's a beautiful board. I love 1792. It's an initiative by the Indian government. Wherever you go in Indian cities, you'll see that particular city. Suppose you're in Calcutta, you'll see boards of I love Calcutta in a number of places. If you go to say Mahabaleshwar, you'll see I love Mahabaleshwar written. So it's a beautiful initiative by the government of India. It's to promote a lot of warmth and love for one city. It's a white ball. Vishesh taking a couple of wickets. Just a single there. In the previous over, it's pretty good. Smashed. That's 4. Superb shot that. Very good shot. Three balls left in this over. This time in the air. And stopped well by the fielder. Swing and a miss. That's a big shot. It's comfortably taken. The 5th wicket down. Half the side is back. Rohit Handa departs. Bojangles Blasters on top now. Karanveer Marwa, the new batter in. Five wickets down now, RSH Blasters.
48 needed in 18 balls. Humongous task. It's an uphill task. You can see the required run rate 16. Skipper and Navya Kapoor just setting the field. This time tapped on the offside. Navya Kapoor now. Down the ground. Singles and doubles really won't help the cause of the batting team. They need bigger shots. They need bigger hits. They need boundaries now. Tapped. It's going to be just a single. And the equation is getting very, very tough here. Seems like an improbable task now. Navya Kapoor impressing so far. In the air. Clears the point. Fielder. That's 4. 40 needed now. Last ball. At the end of 8 overs, it's 70 for 5. Look at our sponsors. And look at the Kolkata Knight Riders board. If you hit here, you'll get double the run. So a lot of batters would be hoping to hit the runs here. Pranav Jatia conceded the 12 runs in the previous over. He's going to continue. Let's see. 38 needed in 12 balls now. There you go. Bowled him. Sean Kapoor's disappointing innings comes to an end.
bowled him. Next batter in is Proteam. Proteam. New man in. .37 in 10 now. They need the big shots. They need the big sixes. Otherwise, it's all but over for RSH Blasters. Both the teams are playing the final league campaign in the CCFC T10 League. Let's see what they can do. Couple of sixes will help. Swing and a miss. Very poor wicket keeping. .72. Swing and a miss. In the air, lofted shot. Do they come back for the second? Yes, they do. That's smashed. Will it be taken? No. False shot. At the end of 9 overs, it's 75. .33 needed in the last over. And look at the famous board where before digitalization and modernization of sport, this is where the scoring used to be done. And it's good to see that it's still done to every single over. It is changed. Navya Kapoor to bowl the final over. Smash down the ground. The match is well but over for the batting team, who will slump to their 5th defeat. RSH Blasters completely lost the plot in the CCFC T10 League. They need to come back stronger. Just
go over everything and just see where they went wrong. And for Bojangles Blasters, they'll be pretty happy with the performance today. It was a thumping performance. In the air, that should be taken. The shot of the third man fielder, and his hair has come out. That's not the best sight. Oh, sorry. Thank you. Bold, completely bold. Outfoxed the batsman. You can see the replay. Full line delivery. Absolutely taken. Ritwik is the new batter in. Dot ball. 2 balls left in this over. Over time for the young man to come in. Final 2 balls. 28 needed. What's he going to do? Is he retaining strike? It's a lovely cover drive. I wonder what was he doing earlier. Should have just asked the captain, hang on, I can bat. Let me come up in the order. Final delivery from Navya Kapoor. In the air. That should race away to the fence, and that's a boundary. But doesn't matter, as the Bojangles Blasters win by a comfortable margin of 22 runs. That's it from me. This is your commentator Shayan Tushengupto signing off. সুখেন তোর ওখানে যে তোর করে দিয়েছে সুখেনের ওখানে আছে সুখেন রতনদা তোমাদের সবার কনভার্টার নিয়ে আসবি আর তারগুলো এমন ভাবে গুছিয়ে আসবি যাতে হচ্ছে হয় মানে ওই হয় সব প্যাকআপ দিয়ে দেবো প্যাকআপ দিয়ে দিলাম প্যাকআপ দেবো দুই তিন প্যাকআপ আর ওই সব নিয়ে আসবি আর তারগুলো যেন
रिदम के साथ जब रोटी को भी घुमाना हो तो ये करो। और जब टैक्स सेविंग के साथ लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन करना चाहो तो आप बस ELSS करो। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार के जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। हसल के साथ जब हेल्थ का भी ख्याल रखना हो तो ये करो।